हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को आशा करी समस्त भले थिबे पुणी स्वागत करी आपन को इंग्लिश पेडागोजी रो बहुत शानदार 30 क्वेश्चन सेशन को सो आई होप आपन माने जो वीडियो मु अपलोड करी से वीडियो आपन देखुथिबे एंड वीडियो को आपन को माने से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपन को भल लागतो चलंतु 30 क्वेश्चन पुणी आपन को नेसी इंग्लिश रो 30 क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर करिया एंड सब वीडियो रो जो वीडियो डॉक्यूमेंट बा जो जहां भी क्वेश्चन माने डिस्कशन होची सब जिंस टेलीग्राम चैनल आपन सर्च करि परिबे ओडिया एग्जाम गुरु एकेडमी आपण सर्च करले टेलीग्राम चैनल आपण टेलीग्राम रे जाकी तेला आपण चैनल जो ए चैनल लोगो जा आछि टेलीग्राम चैनल के लोगो से आछि आपण सेठी जॉइन कर चलंतु देन कोई वीडियो स्टार्ट कर राइट वीडियो स्टार्ट करना वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करिया अच्छा प्रथम क्वेश्चन है हम पाखरे कोन ना व्हाट इज द प्राइमरी इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल अच्छा इंग्लिश लर्निंग रो प्राइमरी इंपोर्टेंस कोन एलिमेंटरी लेवल ले कोन है ऑप्शन कोन अछि ऑप्शन अछि आपण मानकर टू रिप्लेस मदर टंग एंटायरली मदर टंग को कंप्लीटली रिप्लेस करिया पई to secure employment abroad, to act as link language of higher education and global knowledge access, to master complex literary analysis. तो आंसर कोन रिप्लेस मदर टंग को रिप्लेस करे पाइ चाहे to secure employment abroad रे एला ही परिबो बट प्राइमरी इंपोर्टेंस कथा कहै छी तो कोन ही परिबो लिंक लैंग्वेज एटा कोन हबो लिंक लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन a key competency specification objective of learning English at the elementary stage अच्छा key competency specification objective at elementary stage to enable learner को कोन टाइम enable करा छी memorize all irregular verbs translate text from English to their mother tongue माने जहां इंग्लिश रे थिबा से जिंस को समय ट्रांसलेट करबे comprehend and respond appropriately to simple instruction and communication एटा आंसर बिकॉज़ respond appropriately जोडा इंग्लिश टर्म अछि इंग्लिश लर्निंग अछि प्राइमरी स्टेज रे एलिमेंटरी स्टेज रे पिला माने जस्ट सुनिबे समथिंग किछि सुनि के मन रखिबे किछि रेस्पोंड करबे एंड कम्युनिकेशन करे से जिंस हेल्प होबे आंसर कोन आंसर हो सी एडी में आंसर लिखि आंसर हो कोनटा सी नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इन लैंग्वेज टीचिंग सजेस्ट दैट the effective teaching must create a अच्छा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इन लैंग्वेज टीचिंग सजेस्ट दैट इफेक्टिव टीचिंग मस्ट बी इफेक्टिव टीचिंग कोन क्रिएट करबा दरकार स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन क्लास एनवायरनमेंट नीड एंड इंटरेस्ट इन द लर्नर टू यूज प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक ओनली सिस्टम वेयर मिस्टेक्स आर पनिश्ड इमीडिएटली एटा बन पनिशमेंट आज इमीडिएटली पनिशमेंट छाड़ा ठीक नहीं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन द प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन एटा तो हबन तो आंसर कोन हबो आंसर आपन मानकर बी बिकॉज़ नीड एंड इंटरेस्ट इन द लर्नर का नीड तांकर इंटरेस्ट कोनटा होची एवं से जिंस को प्रैक्टिस करिया मोर प्रैक्टिस डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक हबन आंसर कोन आंसर हबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन the principle of naturalness the principle dictates that the sequence of language skill acquisition should be principle of naturalness dictates that the sequence of language skill acquisition जेंता हमें ऑलरेडी ओडिया पेडागोजी रे गोटे क्वेश्चन हम पढिथिले माने को स्टेज रे को सीरियली हमें केमति जिंस को नबा एटी सेमति जिंस principle of naturalness dictates that the sequence of language skill acquisition should be केमति आसीबो फर्स्ट कोनटा आसीबो फर्स्ट आसी आपन कर लिसनिंग तापरे स्पीकिंग तापरे रीडिंग कहबो सॉरी पढिबो तापरे राइटिंग आंसर कोनटा देखिया बी बी आंसर एला आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन The principle emphasizes that the new language item should be taught by relating to it to real life situation and immediate environment. अच्छा, principle emphasizes that a new language item should be taught by relating it to a real life situation and the immediate environment. कौन principle? Which principle? एटा principle of accuracy, principle of correction with light, principle of habit formation, repetition तो हबनी. Question कोन पढिछि? Question कहछि which principle emphasizes that a new language item should be taught by relating to real life situation को relate करिकि new language item को पढावा. तो कोनटा? Correlation with light. हैबिट फॉर्मेशन भी यही करियो बट मोस्ट प्रोबब्ली आंसर हैबिट को रिलेशन लाइफ से तो कोरिलेशन करिवो तापर प्रिंसिपल से जिंस से तो माने एक्विजिशन आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन The multilingual approach to language teaching in a diverse classroom emphasizes multilingual approach to language teaching रो multilingual जो approach रहउची in a diverse classroom रे multilingual approach को जो रहउची language कोनटा को emphasize करूची banning the use of mother tongue use को ban करा जिवो teaching only two language to the student only दीटा language पिलांग को पढ़ा जिवो using the learner's mother tongue as a resource and teaching strategy and resource हिसाब रे पिला मान को mother tongue को use करा जिवो isolating the English class from all other subject एटा तो हबनी अच्छा मदर टंग को बैन करा जिवो एटा हबनी टीचिंग ओनली टू लैंग्वेज एटा तो हबनी त एटा आंसर छी टू लैंग्वेज कर किछि भी जोठी कन्नड़ पिला मानकर मदर टंग सेठी जदी हमें हिंदी पढाइबा जोठी पिला मानकर मराठी मदर टंग सेठी जदी हमें कन्नड़ पढाइबा जोठी पिला मानकर उड़िया मदर टंग सेठी जदी हमें बेंगली पढाइबा तो से जिंस इफेक्टिव हेबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन व्हेन टीचिंग मूव्स फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अच्छा लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन व्हेन टीचिंग मूव्स फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट व्हिच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज दिस कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जते जाउची कोन प्रिंसिपल फॉलो करूची एटा करिवो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडिंग ना प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ना नॉन टू अननोन ना एक्टिविटी होबनी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जते जाउची एक्टिविटी होबो नै ग्रेडिंग तो करा जाउ नै बिकॉज़ कॉन्क्रीट पिला किछि जिंस नॉलेज अछि बट प्रॉपर नॉलेज जते एब्स्ट्रैक्ट आसी जाउची से जिंस ओवरऑल आईडिया रहउची तो एटा कोन हबो नॉन टू अननोन
ଯେତେବେଳେ proceeding from none କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। Next question. When a teacher first explains the rule of the present perfect tense, then asks student to form sentence, they are using the first rule. ପ୍ରଥମ ଯଦି rule ମୁଁ କହିଛି ସର୍ଟ ଆସିବ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ, ଡିଡକ୍ଟିଭ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ମେଥଡ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇଂଲିଶ ମେଥଡ ଅଛି ସେଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ସର୍ଟସ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ଓଟିଟି ପୂର୍ବରୁ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସର୍ଟସ ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ସବ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟସ ରେ ଦିଟା ତିନିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ରହିବ। ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କরি ଆପଣ ସର୍ଟସ ଗୁଡା ବି ଦେଖିବେ ନିହାତି। ଆଚ୍ଛା କୌଣସି क्वेश्चन ଦେଖିବା रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देन आस्क स्टूडेंट टू फॉर्म सेंटेंस दे आर यूजिंग द कोम जेते टीचर फर्स्ट एक्सप्लेन करिवे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन कर देले तापर टीचर स्टूडेंट मानन को कहबे जे सेंटेंस मेकिंग करो तो एटा कोन प्रकार आसीबो एटा आसीबो डिडक्टिव मेथड बिकॉज़ इंडक्टिव मेथड तो नियम बाहर करा होछि डिडक्टिव मेथड ऑलरेडी फर्स्ट नियम कहि दिया जिवो तापर पिला आंसर बाहर करिवे माने सेंटेंस मेकिंग करिए तो डायरेक्ट मेथड तो नहे कम्युनिकेशन मेथड नहे आंसर कोन हो डिडक्टिव मेथड ए नेक्स्ट क्वेश्चन The main challenge of teaching English in a diverse classroom is often related to main challenge English classroom और diverse classroom रे English teaching करिबा कोन ता main challenge lack of smart classroom एटा नुहे because blackboard रे भी पिला माने बहुत भलो पढुछंती गछ मय भलो overcoming the interference of mother tongue जोंटा language one रहउची interference एटा हबो आंसर because पिला माने पिला बेलु मदर टंग सहित बहुत कंफर्टेबल थानी से लेवल कंफर्टेबल से माने इंग्लिश लैंग्वेज सहित बिकॉज़ मन रे गोटे भय थाइ जे से कोन असुविधा हबो सेही हिसाब रे स्टूडेंट एबिलिटी टू ड्रॉ पिक्चर एटा नुहे मैनेजिंग क्लासरूम न जेटा तो आंसर हबो कोन आंसर हबो बी आंसर हबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन्वॉल्व चूजिंग आइटम बेस्ड ऑन देयर रेंज अच्छा सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल्स इन्वॉल्व चूजिंग आइटम बेस्ड ऑन रेंज एंड निजर जो प्रिंसिपल लैंग्वेज मटेरियल जते चूज करथिबे को बेस रे ताकू से माने चूज करिवे रेंज ताको निजर पड माने खर्च से हिसाब रे कोट चूज करिवे एंड आउ लिटरेरी वैल्यू ना फ्रीक्वेंसी ना यूटिलिटी ना लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ना हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस तो होबनी लिटरेरी वैल्यू भी तो होबनी कोठा आंसर हबो फ्रीक्वेंसी यूटिलिटी केते बेसी से माने फ्रीक्वेंसी रा यूज करि परिवे केते यूटिलिटी से माने मोर एंड मोर वेरियस एंगल से जिंस को जते यूज करि परिवे सेही विषय से माने यूटिलिटी को जाई परिवे ना तो आंसर हबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन which pair of skill are categorized as productive or expressive skill कोन पेयर प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल को एक्सप्रेस करूची जेमति गोटे थिला रिसेप्टिव रे कोन थिला रिसेप्टिव रे जोंटा रिसीव करूची तो रीडिंग थिला एंड स्पीकिंग थिला सॉरी लिसनिंग थिला एटा कोन एक्सप्रेस करूची माने जेतले से एक्सप्रेस करूची तो राइटिंग आसी जिवो तो निज भाव को आदान प्रदान करूची एक्सप्रेस करूची एंड स्पीकिंग तो राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग आंसर हबो सी नेक्स्ट क्वेश्चन अछि the concept of interdependence of four basic skills suggests that एटा ऑलरेडी ओडिया रे भी सेम टाइप को गोटे क्वेश्चन थिला कोन अछि ना इंटरडिपेंडेंस ऑफ फोर बेसिक स्किल कोनटा अछि द स्किल शुड बी टॉट सेपरेटली तो सेपरेटली एटा जो सेपरेटली टॉट करिवा एटा अलग अलग टॉट करले काहारी भी इंटरडिपेंडेंस से माने अछन ना तो कोनटा डेवलपमेंट ऑफ वन स्किल पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर एटा हबो आंसर आउ गुडा को जिबा दरकार नै बिकॉज़ ऑप्शन भी जळा पड़छ एटा हबो आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल एंड शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ना सेमते नै listening speaking are most sufficient basic communication एटा आंसर हबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन which activity is the most effective technique for developing speaking skill को डेवलप करिया पई कोनटा इफेक्टिव स्किल आछि एटा रोइला स्पीकिंग स्किल तो कोनटा मोस्ट इफेक्टिव कोनटा रहला साइलेंट रीडिंग memorizing a long list of vocabulary role play dialogue and guided conversation एटा आंसर ना स्पीकिंग क्वाइची पिला रोल प्ले करूची डायलॉग कहउथबो गाइडेड कन्वर्सेशन जतो करथु बेसी स्पीकिंग स्किल आसीबा ना मेमोराइजिंग तो मने रखियो भितरे रहिबो ई फायदा नै कॉपीइंग नोट्स फ्रॉम ब्लैकबोर्ड एटा तो हबनी कॉपी करूची तो कोन आंसर हबो कोन आंसर हबो सी नेक्स्ट क्वेश्चन recitation of poem or rhymes is primarily a technique used for developing आ गोटे कथा मु जो क्वेश्चन आंसर ओडिया रे बहुत ओडिया रे एंड इंग्लिश रे जो क्वेश्चन अपलोड कर जे टेलीग्राम रे मु आंसर देनी वीडियो देखिबे वीडियो देखि साला पर सेठी ऑप्शन आंसर अछि मु देइछि माने क्वेश्चन ही अछि तो क्वेश्चन सेठी पढि साला पर ओनली क्वेश्चन अछि आपण निजे प्रैक्टिस करिवे जो क्वेश्चन आंसर आसिलानी और प्रैक्टिस करी लिखिबे थरो एमती नंबरिंग कर देबे ए एक नंबर क्वेश्चन ए दुई नंबर क्वेश्चन सी तीन नंबर क्वेश्चन डी नंबरिंग कर देले तापर 30 टा क्वेश्चन ठीक करले कि भूल करला आपण आसी वीडियो देखि परिबे वीडियो देखि साला पर जमा पड़ियो ठीक करछन भूल करछन सेटा हम सेठी आंसर देई नै पेडागोजी रे केवल थिला आ कोन किछि भी देई नै ऐसा नै क्वेश्चन कोन अछि रिसाइटेशन ऑफ पोएम और राइम्स पोएम राइम रो रिसाइटेशन इज प्राइमरीली टेक्निक यूज्ड फॉर डेवलपिंग
अच्छा प्राइमरी टेक्निक रिसाइटेशन करिवार कोन स्किल को से डेवलप करछि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल राइटिंग कंपोजिशन राइटिंग तो नुहे कंपोजिशन राइटिंग नुहे बिकॉज़ राइटिंग नुहे रिसाइटेशन कराउछि ग्रामर प्रोफिशिएंसी नुहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग तो नुहे रिसाइट करूछि तो आंसर कोन हो लिसनिंग एंड स्पीकिंग जण केमति भल प्रोनाउंसिएशन करूछि केमति राइम को ठीक से गाई पारुछि एंड जण केमति भल से सुनी पारुछि से सब ऊपर डिपेंड करूछि आंसर हो बी नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंशन पाई पाठ माने पढिबा एबिलिटी कौन एबिलिटी को से बेसी एम्फासाइज करछि रीडिंग अ टेक्स्ट विथ परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन अंडरस्टैंड एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द राइटिंग टेक्स्ट रीड एज फास्ट एज पॉसिबल विदाउट स्टॉपिंग recognize every letter in the text तो आंसर कोन हबो रीड टेक्स्ट विथ परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रोनाउंसिएशन एंड कॉम्प्रिहेंशन दीटा डिफरेंट जिंस तो आंसर हे पारियो बट एना मोस्ट प्रोबेबली आंसर हबो कोन अंडरस्टैंडिंग एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द राइटिंग टेक्स्ट राइट एटा आंसर बी because read as fast as possible एटा फास्ट पढी की फायदा कोन recognize every letter in the letter एटा भी हे पारियो बट मोस्ट प्रोबेबली आंसर हबो बी अच्छा आ गोटे कथा 15 नंबर क्वेश्चन पर जदि आपन मन को लागुची जे स्पीड हेउची ठीक है तो स्पीड को रीजन भी एटा अछि बिकॉज़ इंग्लिश एमती गोटे लैंग्वेज इंग्लिश एमती गोटे चैप्टर जहार जदि आपन थ्योरी क्लियर नथिबो आपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जे फायदा बनी मु क्वेश्चन प्रैक्टिस भीतर सब थ्योरी तो कवर करि परिबि नाही थ्योरी आपण ठीक से रिवीजन एटा रिवीजन क्लास मॉक टेस्ट टाइप रे होची आपण या भीतर बहुत सारा कांसेप्ट 30 टा क्वेश्चन भीतर आपण 60 प्रकार आपण क्वेश्चन कांसेप्ट पाइबे बट ता भीतर ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपण मन को पय कोन थ्योरी को आपण भल से पढिया पई पडियो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन which strategy for teaching reading focuses on recognizing word as a single unit often with the help of flashcard and picture कौन strategy टीचिंग रीडिंग फोकस माने टीचिंग रे रीडिंग करिया फोकसेस कोन स्ट्रेटजी जो कोन स्ट्रेटजी को समाने फोकस करूची कोनटा हबो फोनिक मेथड ना अल्फाबेट मेथड ना सेंटेंस मेथड ना वर्ड मेथड टीचिंग आसी व्हिच स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग रीडिंग को कोन स्ट्रेटजी फोकस ऑन वर्ड रिकॉग्नाइजेशन आउची तो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन जेतर कथा थ्योरी रे आपण मान जानि आंसर कोन हबो वर्ड मेथड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन ता आसी वर्ड मेथड हबो आंसर हबो डी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन skimming as a reading technique is used when a reader wants to skimming as a reading technique user reader जैसे कौन टा skimming पाई पिला कौन पाई जन skim को find a specific date or name get the general idea of gist or a long of a long article read every word carefully for translation check the spelling mistake तो skimming जदि जन करछि skimming पाई कौन सी प्रकार specific date स्किमिंग स्कैनिंग ए सब जिंस आपण मानन को पाई मु शॉर्ट्स रे सब बेसिक जिंस शॉर्ट्स रे मु अपलोड करबी से जिंस आपण देखि परिबे तो एबे फिलहाल एई सब क्वेश्चन पाई आपण मानन कोइ रखुची स्किमिंग पाई आंसर कोनटा हबो आंसर हबो गेट द बेसिक जनरल आईडिया जस्ट थोड़ा ओवरऑल जिस्ट जानि बाहरी करियार अछि पेपर जेंति पढंती कोन कोन लिखा अछि ए डेट रे एडा आइतला से डेट रे एडा आइतला तो हिसाब रे आंसर हबो कोनटा आंसर हबो बी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेंसिव रीडिंग इज मींट फॉर इंटेंस बड़े मैं जते इंटेंस मोमेंट रे थाई तो सेही थ्रू जाना पड़े इंटेंस रीडिंग प्योरली फॉर प्लीजर पाई इंटेंस होते भल से डिटेल्ड रीडिंग कॉमिक बुक एडा व्यापक पठन जोटा रहते इंटेंस नुहे इंप्रूविंग रीडिंग स्पीड ऑन एडा नुहे आंसर हो कोन आंसर हो बी नेक्स्ट क्वेश्चन द फोनिक मेथड इज क्रूशियल इन द इनिशियल स्टेज ऑफ रीडिंग बिकॉज़ सुनी की भल से प्रोनाउंसिएशन ऊपर जिंस रहउची तो phonic method is crucial in the initial stage of reading development because it establishes the connection between sentence and paragraph, word and meaning, graphemes जोटा letter and phonemes जोटा sound. आंसर कोनटा हबो phonic method sound ऊपर डिपेंडेंट रहउची तो आंसर हबो phonemes and graphemes आंसर हबो सी listening and writing तो हबोनी because listening writing एटा होची शब्द ध्वनि Sony method is ध्वनि ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी फोकस व्हाइल टीचिंग कंपोजिशन composition teaching रे प्राइमरी फोकस on डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल शुड बी ऑन प्राइमरी टीचिंग कंपोजिशन ले प्राइमरी जो डेवलप राइटिंग स्किल डेवलपमेंट करे पई कोनटा प्राइमरी फोकस कोनटे रहइबो करेक्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ पंक्चुएशन ओनली परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएटिविटी एटा कोन जते बेले राइटिंग स्किल जते जण देखौची कोनटा प्राइमरी फोकस कोन थी राइटिंग निज एक्सप्रेशन को भल से एक्सप्रेस करि परिबा ना ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द
which is the initial stage in the development of the writing skill for a beginner. Writing skill को develop करिया पाई गोटे beginner case रे initial stage कोन टाइप करियो? Drafting and editing, writing complex sentences, pre-writing activity जोंटा scribing, drawing and letter formation, learning the rule of grammar. Writing skill ଯେତେବେଳେ develop करिया पाई primary stage रे कोनटा उपरे बेसी गुरुत्व दबा कथा drafting and editing नुहे. Writing complex sentence initial stage complex sentence पहला लिखि परिबनी. Pre writing जोंटा scribing, drawing तो writing first goal एमती करिवो, चारि कोणिया घर बॉक्स करिवो, एमती एमती करूथबो, ओडिया लिखिला एमती तो writing skill ପାଇଁ first figure करिवो, तापरे scribing करे एमती 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 ओ और ए ए सब जिंस अछि तो ए सब ऊपर डिपेंड करते आंसर कोन हेबो? प्री राइटिंग एक्टिविटी जोंटा करिवो आंसर हेबो सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, the sentence method of reading teaching. Sentence method of 22 number question. Sorry. A student looking through a phone directory to find a specific number. A student looking through a phone directory to find a specific number is engaged in. निज फोन को देखुची एंड गोटे स्पेसिफिक नंबर कोनठी अछि से जिंस अनै पई सेटा करूची. एटा कोन जिनस को कौन सेंस को कौन टाइप रीडिंग ताकू कहजिवो? स्किमिंग ना एक्सटेंसिव रीडिंग ना स्कैनिंग ना जस्ट टिके स्कैन कर देबो कोनटी से स्पेसिफिक डायरेक्टर अछि स्पेसिफिक नंबर अछि देखि देबो सरला. तो आंसर हो कोन? आंसर हो सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस मेथड ऑफ रीडिंग टीचिंग इज एडवांटेजियस बिकॉज़. सेंटेंस मेथड जेतेबेले टीचिंग रे सेंटेंस मेथड को आमे यूज करूचे सेतेबेले एटा एडवांटेजेस कोनथि पय एडवांटेज हुए? टीचर्स आइसोलेट्स लेटर को आइसोलेट करी सेही पय नुहे. कनेक्ट वर्ड इमीडिएटली टू मीनिंगफुल थॉट्स इन इट एटा ही पारे बिकॉज़ सेंटेंस मेथड कोन विभिन्न प्रकार वर्ड्स को हमें कंबाइन कर सला पर से गोटे सेंटेंस हे जाउची तो तार इमीडिएट मीनिंग जते आसी जाउची हमकु इजी होची पिला मान को बुझे पे फोकस हेवीली ऑन अल्फाबेट ऊपर फोकस एटा तो अल्फाबेट मेथड नुहे. Is the fastest way to do it. Answer कौन? Answer होगा B. Next question. Storytelling in the classroom. Storytelling in the classroom helps develop which two skill? जेतेबेले storytelling होची classroom रे कोन दीटा स्किल को से डेवलप करची? रीडिंग एंड राइटिंग. स्टोरीटेलिंग रे राइटिंग कोन काम? लिसनिंग एंड स्पीकिंग. जने सुनुथुबो जने कहउथुबो जेमती ओडिया पेडागोजी म कहितली जने सुनुथुबो तो स्टोरीटेलिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग. ग्रामर वोकैबुलरी किसी काम नै, ड्राफ्टिंग एडिटिंग किसी काम नै. आंसर होबो B. Next question. अच्छा, punish student who perform poorly. अच्छा, कौन सी क्वेश्चन? The main objective of assessment of English assessment रो main objective कौन ही परियो? Punish student who perform poorly. Student को punish कले कौन हो? Measure the learner proficiency and achievement in the language skill. Compare one student against another. Comparison is never good. ग्रेड द टीचर परफॉर्मेंस को ग्रेड करले पिला मानन को ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑब्जेक्टिव केमति फिल अप. आंसर हो कोनटा? मेजर द लर्नर प्रोफिशिएंसी एंड अचीवमेंट इन द लैंग्वेज स्किल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड. फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्टेड केते बेले हुए? ओनली एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर नो, बिकॉज़ मझे मझे यूनिट टेस्ट गुडा होची सेटा थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर ओनली टू प्रोड्यूस द फाइनल पासिंग. तो आंसर हो बी. आंसर हो बी. समेटिव फॉर्मेटिव केतेबेले? समेटिव होची ईयर एंड रे जोंटा सामासिक परीक्षा एंड वार्षिक परीक्षा. फॉर्मेटिव होची यूनिट टेस्ट मझे मझे पिला मानको क्लासरूम रे पढेला बेले से सब जिंस फॉर्मेटिव को यूज कर दे पारिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टूल इज मोस्ट सुटेबल फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी. स्टूडेंट को स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी को जानिया पई एसेस करिया पई कोन टूल यूज करा जिवो? राइटिंग ग्रामर टेस्ट, रिटन ग्रामर टेस्ट, ओरल कन्वर्सेशन. ओरल कन्वर्सेशन जदी रीडिंग पई कथा को आउची तो ओरल केनती होबो? हबनी इंटरव्यू. अच्छा, स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी पई ओरल ही हबो. राइटिंग पई ग्रामर टेस्ट एडा हबनी बट जेतेबेले स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी पई आसी तो ओरल कन्वर्सेशन और इंटरव्यू एडा हेले और रोल प्ले कले भी ही परिबो. तो आंसर हो कोनटा? आंसर हो डिक्टेशन तो पिलांको रीडिंग टेस्ट पई. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कले पिला मानको नॉलेज बा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पई होची. तो आंसर हो कोन? आंसर हो बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसिंग ए लर्नर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. assessing a learner's reading comprehension. गोटे लर्नर रो comprehension reading को जते हमें assess करूछु एंड proficiency
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी को जते हमें एसेस करछु सेते बेले कोन टाइप रो इवैल्यूएटिंग कोन टाइप रो एबिलिटी को हमें सेते बेले देखुछे कोन टाइप रो एबिलिटी रीड अ टेक्स्ट क्विकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड एनालाइज इंटरप्रेट एंड इन्फर मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक रु तार मीनिंग को बाहर करबा ताको एनालाइज करबा ता भीतर कोन अछि पूरा माडी जकड़ी की ता टोटली रस निचुडी की ये करदबा सेटा होछि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी तो आंसर कोनटा होछि आंसर हबो सी बिकॉज़ एनालिसिस ना पिला केते एनालिसिस करि पर से जानबा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देले कोन हबो भीतर ताको एनालिसिस करिया पई पड़ियो एग्जैक्ट मीनिंग कोन सम टाइम गोटे टाइप रो लेखा हेते बारता सेंस डिफरेंट मीनिंग करते तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटर तो हबो नै आंसर हबो कोन आंसर हबो सी नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर notice a teacher notices students are repeatedly making errors in using preposition on in at जेते गोटे पिला on in at preposition ये रे भूल करूची to find the root cause of this systematic teacher should कोन टाइप टीचर करबा दरकार जेते बेले पिला प्रिपोजिशन भूल करूची कोन टाइप रो ता पाखे ताकू टेस्ट करिया दरकार जेते बेले पिला अचीवमेंट टेस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट समेटिक ए सब टाइप रो टेस्ट का को जाय कोन को जाय मु शॉर्ट्स रे वीडियो छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर देबी आपण माने भी देखि देबे शॉर्ट टाइम लागो जेमति रील स्क्रॉल करछन्ती शॉर्ट्स देखुछन्ती से जिंस समेति भी देखि देबे आपण पाइबे तो आंसर कोन हो आंसर हबो सी डायग्नोस्टिक टेस्ट बिकॉज़ प्रॉब्लम कोनटा हो जाने पई डायग्नोस्टिक ही तो करा दरकार बिकॉज़ पिला बार बार भूल करूची ठीक को से जाने पई जना पड़िबनी तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जेते हम करूचे से जना पड़ी जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन which skill is assessed when a teacher asks student to summarize the main point of text they just read कौन स्किल एसेस करिया पाई जते बे टीचर पिला मन को आस्क करिवे मेन पॉइंट ऑफ ए टेक्स्ट किछि जिंस माने पढिबे टेक्स्ट बुक रे एंड तार समराइज करिया पाई समराइज करि पारुचंती कि नै से जिंस को एसेस करिया पाई टीचर पिला मन को कोनटा करिया पाई कहबे स्पीकिंग फ्लुएंसी राइटिंग मैकेनिक्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन कोनटा करिवे जते बेले कोन स्किल टाको से माने टीचर अप्लाई करिए जोंटा ए जिंस जानि परिबे कोनटा हबो स्पीकिंग फ्लुएंसी फ्लुएंटली स्पीकिंग करले जोंटा एसेस करे मेन पॉइंट जानि पे फ्लुएंटली कहले कम से माने भल से बुझी पारतो सेटा ही परिबो ना राइटिंग मैकेनिक सेटा भी किछ ही परिबोनी बिकॉज़ बुझीबा दरकार कॉम्प्रिहेंशन को बुझी की तार समराइज करबा बुझी की बहुत बड़ो लाइन अछि ताको समराइज करिया पई एतिकी भीतर जे रखियार अछि तो ताको बुझीबा दरकार ना तो कोनटा हबो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ए स्किल ता जदि पिला मान को भीतर थिबो तार सामना करि परिबे अच्छा तो आंसर हबो कोन आंसर हबो सी एतिकी तला 30 टा क्वेश्चन तो 30 टा क्वेश्चन हमर सरला ओडिया पेडागोजी सरला इंग्लिश पेडागोजी सरला हमर सीडीपी कंप्लीट है या पर मैथ पेडागोजी साइंस पेडागोजी एंड आर्ट्स पेडागोजी ईवीएस रो पेडागोजी इफ पॉसिबल मु नै आसी तो कीप लर्निंग या परे आपण मान को कोन सब्जेक्ट रो वीडियो दरकार आपण कमेंट सेक्शन में जणाई पारिए मो से हिसाब रे वीडियो आनि पारि ठीक अछि आज भाई एतिकी पुणी थोड़ा गोटे शानदार जबरदस्त वीडियो आपन सहित देखा हबो बाल छिड़िया है एडिट करदा जय जगन्नाथ।